Hey guys, welcome back to our channel. So this week was really good for option sellers because there were very few spikes, and particularly for the price action traders, it was a superb week. Now I ended up making like a little bit more than 17 lakhs for this week, and I thought, to make the video interesting, why don't I give you a video where I explain all the trades of the week. Okay, so at what point we did what and why we did it. I think it will be particularly very useful for all of you. So first, I'll cover the analysis for tomorrow. After that, I'll give you my trade explanation for the current week, how we traded. Because if you missed certain things in this week and you ended up making lesser profit, what could you do the next time? Okay, I'll tell you. So let's get started with the current week's analysis for tomorrow. Actually, I'll explain the weekly candle and then first we'll start with the trade explanation. Then we'll go to the analysis for tomorrow. So first of all, see, just observe the last weekly candle. Okay, I'm telling you to observe this red candle. Now, what does this red candle mean? मेरे को दो चीजें दिखते हैं इसमें. फर्स्ट थिंग आई कैन स्पॉट अ बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न. So bearish engulfing pattern means the likelihood of the market going up at least above 49,300 is fairly slim. So the market can go up for this week. That was our view, but it should not go up above 49,250. So that's what we got from the weekly candle closing. Now this 49,300 call option on this day, on Fridays, okay, this candle closing, it was trading around 19 rupees, 1920, something like that it was trading. Now we need to capture around 60 points a week, okay, that's our target, 60 points kamane ka hai. So if this option is sold approximately close to somewhere 20 rupees, that will take care of 1/3 of our target for the week. Okay, so this is what we inferred from the weekly candle. Now what happened on the daily time frame? Daily time frame pe I have marked Friday high. Now I'm marking Friday low. This was the day where we initiated our positions, because Friday 3:15 you can see the weekly candle how it's closing. Okay, so bearish engulfing we got. Now whenever we got the bearish engulfing, we already know market इसके ऊपर जाने का probability बहुत कम है ये हफ्ते में. Okay, so 49,200 and above call should go to zero. That's the first thing. Now next thing what happened Friday को, it was a doji. So doji पे usually there's an indecision candle. Indecision candle पे our positions were strangles. We sold strangles. Okay, short strangle both sides. All put both. Cool. And Monday ko we got a pin bar. So in this pin bar, I uploaded on Twitter also that day. We made a fairly decent profit because our view was, if we get some bullish indication, we'll go heavy on the puts. Because market is very close to a support zone. Now this zone was a support zone. Now why do I say this is support zone? Observe this candle. Okay. The moment market came here, strong buying was there. It made a new all-time high. Okay. Now because this level made a new all-time high, market, there's very high chances whenever market comes back to this level, it goes up at least a little bit. I remember Nikita also in a weekly analysis, she told you she'll be looking for bullish trades also, because here we can't take bearish trades. Already market has come down, so risk reward for taking bearish trades is low. So what we did, we just went and sold this OTM. ये जो call के जो OTMs है ना, ये सब जाके we sold, and simultaneously puts also we sold because the put premiums were very high. Now one more thing I learned from Nikita, whenever ऐसा falling channel मिलता है ना हमको, तो उसका breakout you have to trade, and the breakout is very powerful always. Okay, so on Monday when the market was selling off, okay, here it came and it started to make a higher high. So W बना दिया यहाँ पे. He told you this in a video also. You can go and check. So we love to trade this WM pattern. What we did the moment we got this, okay, I'm just showing on the daily time frame. 15 minutes पे I showed you the W. What we did, this previous swing low, we started targeting these puts. All these puts, they were very inflated, all of them, और उसमें कुछ spike भी नहीं था. Okay, so call already we sold, and call में when Monday went down, we already made a profit in calls, and we were wanting to make a profit in puts. So first entry तो you got here. Second thing, she posts the technical patterns on all her channels. YouTube पे also she posts, and Twitter पे also she posts the channels. Okay, so यहाँ पे in this strike, when this candle came, she got the channel breakout also. So what happened, jitne bhi puts hamare the, we rolled them up. Now when we initiated this put selling trades, this 46,500 ka put option, this only was at 70 rupees. This alone gives you a damn good return in the week. So here when we started all that, we targeted 46,500 first, okay, and then we kept rolling it up. So after targeting this, now even in today, the market has not hardly for put sellers there was any spike, okay, since that time. That's why this week was very easy. So you target 46,500, and today we've come up to 47,400 also. So sub roll karte that easily profit we've got. And isme to we didn't even take aggressive positions yesterday because there was some data. Nikita didn't want to take risky positions yesterday, so we skipped that part as well.
Okay, and then like this 15-minute candle, nothing it's telling you. ये जो flag बन रहा है, तो we thought flag का breakout आएगा, then we'll take a trade. But flag का breakout भी नहीं आ रहा है. But all our options are there decaying, nothing to do there. And today the expiry, okay, options, if you sold triangles, they opened in profit. And throughout the day, I think they didn't bother you at all. तो आज भी like किसी का लॉस तो नहीं होना चाहिए, बहुत कम ऑप्शन सेलर्स का लॉस होना चाहिए आज. Okay, so cool. So I'm just like repeating again. This was a bearish engulfing on the weekly time frame. That's why this call we wanted to sell at around 20 rupees. Now because we sold that call option, we went ahead and sold a put option also. And Monday when the market came down on this day, Monday, the calls decayed like anything. So what, we just booked those call options. And once the W happened, okay, in the 15 minute, we started targeting these puts. And when the channel breakout happened, we just rolled it up and roll ही करते गए. तो यहाँ से basically हम यहाँ तक आए हैं. All these puts strikes we've sold. धीरे धीरे करके entry कर करके. Cool. So that's how on a price action perspective we've made profit this week. And mind you, this was an easy week for option sellers. Like every week ऐसा नहीं होता इतना easy. Also, like if you missed out on this, or if you targeted something lesser or made lesser this week, I have given you the explanation ki why we sold those calls and then why we sold those puts, okay? And we got a channel breakout also. So I hope it was at least a little bit helpful. जितना आपने किया है उससे थोड़ा सा ज़्यादा आपको, I think price perspective से at least you understand what we did and why we did. Okay, so now let's go to the analysis part of the video. Now today what I can see, okay, I can see market since the last 4 days roughly, it's unable to take out this 48,000 का level, correct? Because market is not closing उसके ऊपर. So I want market to close above this, at least a 15-minute candle, strong candle. So whenever that happens, I'll be taking even a, so if I get this, okay, अगर 48,000 के ऊपर, if I get a good strong 15-minute candle, best would be half an hour अगर sustain करता है उधर तो, then I start selling put options. Now this is just for educational purposes. Like I don't want anyone else to copy what we do. Like this is, I'm just telling you what I plan to do. And by the way, one more thing I forgot to tell you. This thing, this 2 days, this is a bullish engulfing pattern. I've made a video on bullish engulfing pattern also. And I've shown you a small like thing ki why it always works. So again, like when we got this pattern, we know ki we have to take aggressive positions because then this low 47,000 ka low is not going to come in the week, or like the probability of it coming is fairly slim. Cool. So this bullish engulfing low, I don't think can easily be taken out. What I can see on the daily time frame also. Now on the daily time frame, I'm seeing this rising channel also on the daily time frame. इसका basically अगर breakdown होता है तो it's going to be very powerful again. So as of now market को आप देखो higher high structure में ही है, right? मे बी ऊपर जाने का पॉसिबिलिटी है ये. तो इफ इट कम्स डाउन एंड ब्रेक्स डाउन, देन क्या अगर ऐसा कुछ होता है, देन द डाउन मूव कैन बी वेरी पावरफुल ऑल्सो बिकॉज इट्स बीन गोइंग अप इन दिस राइजिंग चैनल. तो उसका ब्रेक डाउन आर वेरी पावरफुल. ठीक है, तो कल के लिए नाउ फर्स्ट थिंग, कल के लिए व्हाट वी हैव डन, कल के लिए नथिंग वी हैव डन. व्हाई? बिकॉज देयर इज अ लाइक इवेंट, ओके, ओवरनाइट. आई थिंक फेड का कोई इवेंट है, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू स्किप पोजीशन. एंड मैं तो वो HDFC फियास्को के बाद वी प्रेफर लाइक नॉट टू टेक ऑन मी. लाइक थोड़ा भी अगर डेंजर दिखता है तो नाउ वी डोंट टेक ओवरनाइट पोजीशंस. ओके, सो ऑन द 15-minute टाइम फ्रेम लेट मी टेल यू, लाइक दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एक्चुअली. ठीक है, ये बहुत बार टेस्ट हो चुका है ये. तो द मोर नंबर ऑफ टाइम्स द रेजिस्टेंस इज टेस्टेड, द वीकर इट गेट्स. ओके, so all I'm looking for here, I want a like strong 15-minute candle यहाँ पे. Preferably first candle नहीं होनी चाहिए. Okay, तो अगर ऐसा कोई कैंडल मिलता है, then I'll be like looking for okay all these puts, I'll start targeting them. And जितना मेरा risk appetite है, I'll be willing to risk that much. Now एक और चीज क्या हो सकता है, okay, it is very much possible that market has come down. ये उसका first pullback है, and it may try to go down. Okay, again, now this is another possibility. मुझे इसके चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं, बट लेट्स सी, ये भी हो सकता है, मतलब बेरिश हो सकता है मार्केट. तो बेरिश कैसे खेलने का मार्केट में? फर्स्ट थिंग तो मेरे को ये एक छोटा रेंज दिख रहा है, तो अगर ये रेंज का ब्रेकडाउन होता है नीचे या ऊपर में, स्पेशली नीचे का, क्योंकि वी आर टॉकिंग राइट नाउ, इफ वी गेट दिस, तो आई विल स्टार्ट सेलिंग कॉल ऑप्शन. नाउ बिकॉज माय व्यू इज बुलिश, ओके, द कॉल ऑप्शन जितना रिस्क आई टेक, इट आई विल टेक स्लाइटली लेसर देन व्हाट आई यूजुअली डू. ओके, एंड आई विल जस्ट पिरामिड माय पोजीशंस. अगर प्रॉफिट मिलते जा रहा है मेरे को, then मैं ऐड करते जाऊंगा धीरे धीरे. Okay, so basically to summarize, we need a 15-minute candle closing above this level, which is 47,900. Strong 15-minute चाहिए, और नीचे में we need something below today's low. So today's low के नीचे if we get something, we'll be trading that. And इस रेंज में I'll just tell you, you better avoid. अगर ये रेंज में ही मार्केट रह रहा है, वो अपॉर्चुनिटी अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक जाने दो, क्योंकि काफी रिस्की होगा उसमें अगर इफ यू टेक एन एंट्री and then the market starts to trend. So let's see, okay, how it goes. Now let's come to the Nifty weekly chart also. Weekly chart में Nifty का, okay, last week was bearish engulfing.
बेरिश एनगल्फिंग मीन्स लास्ट वीक के हाई के ऊपर के सारे मतलब दिस थिंग दे शुड गो टू जीरो. लाइक आई डोंट डू निफ्टी ट्रेडिंग ज्यादा, तो आई डोंट लाइक नो कि कितने प्रीमियम्स थे क्या थे, बट टेक्निकल के हिसाब से वो जीरो जाने चाहिए. एंड ऑन द लोअर साइड आप देखोगे तो ये जो सब लेवल है यहाँ से लेके करंट वीक का 21,800 से लेके 700 के बीच में एक सपोर्ट है. प्रॉब्लम क्या है, ये सपोर्ट 1 2 3 बार टेस्ट हो चुका है. तो द मोमेंट निफ्टी का इसके नीचे अगर वीकली कैंडल क्लोज होता है, काफी नीचे जा सकते हैं हम वीकली टाइम फ्रेम पे भी, वी कैन गो काफी नीचे. ये दो लाइक टारगेट्स तो दिख रहे हैं मुझे, तो लेट्स होप दैट नॉट हैपेंस. एंड ऑन द डेली चार्ट आई एम सीइंग दिस रेजिस्टेंस. ओके, द मार्केट इट टुक रेजिस्टेंस हियर एंड अगेन टुडे इट टुक इट हियर. ओके, सेम जगह पे मार्केट रेजिस्टेंस लेने को ट्राई कर रहा है. तो वी नीड 20 to 300 के ऊपर मार्केट 15 मिनट्स में कंफर्टेबली लाइक हाफ एन आवर अगर ट्रेड करेगा तो लाइक पॉसिबली बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है मार्केट ऊपर जाने की फिर. ओके, एंड नीचे में 1 2 3 बार ये ट्रेंड लाइन जो है नीचे टेस्ट हो गई है. तो इफ निफ्टी कम्स डाउन स्पेशली और कंसोलिडेट करता है यहाँ पे, हो सकता है बेरिश पोलैंड फ्लैग बना के देन एक ब्रेकडाउन दे दे. ठीक है, तो इफ इट कम्स डाउन अगेन आई विल बी वेरी कॉशियस. लाइक स्पेशली बुलिश व्यू में थोड़ा बहुत कम कर दूंगा अगर मार्केट नीचे आता है तो. निफ्टी में 15 मिनट टाइम फ्रेम पे निफ्टी में अकॉर्डिंग टू मी यू शुडंट बी हैविंग एनी ओवरनाइट पोजीशंस, क्योंकि वो रिस्क रिवॉर्ड वर्थ इट नहीं है. अगर कल मान लो खुल भी गया नॉर्मल और आपको आपके ट्रायंगल में प्रॉफिट मिल भी गया, ओके, तो वो रिवॉर्ड उतना ज्यादा नहीं होगा वर्सेस जब वो लॉस देने वाला है ना, काफी ज्यादा होगा. तो फ्रॉम ओवरनाइट पर्सपेक्टिव अकॉर्डिंग टू मी यू शुडंट बी हैविंग एनी पोजीशंस. लेट्स सी कल क्या करना है. आई सी वन रेजिस्टेंस हियर एट 22,350 1 2 and 3. ठीक है, 3 बार. तो मार्केट वेन एवर इट गोज हियर थोड़ा सा हॉल्ट करके अगर एक ब्रेकआउट देता है, देन आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड टू प्ले अग्रेसिव पुट सेलिंग टुमारो. ओके, 22,350 के ऊपर. ओके, तब तक के लिए लेट्स सी मार्केट, बिकॉज यू नो द काइंड ऑफ कैंडल्स निफ्टी इज मेकिंग, मजा नहीं आ रहा है उसमें, बहुत छोटे छोटे कैंडल बना रहा है वो. एंड आई थिंक कि लास्ट 2 डेज के रेंज में अगर ये निफ्टी ट्रेड कर रहा है तो इसको करने दो. एंड आई एम नॉट एक्चुअली इंटरेस्टेड निफ्टी एक्सपायरी खेलने में. इट्स द वर्स्ट एक्सपायरी. इसमें पैसे बनाने बहुत मुश्किल है, कितना भी लॉजिक लगाओ इसमें पैसे बनते ज्यादा लॉजिकल वे से नहीं है. आई डोंट नो हाउ दोज लाइक गुड ट्रेडर्स लाइक हु ट्रेड निफ्टी आर डूइंग इट, but आई एम श्योर द नंबर ऑफ ट्रेडर्स हु मेक प्रॉफिट ओनली फ्रॉम निफ्टी दे आर वेरी लाइक लो. और अगर या तो बनाते हैं तो बहुत कम बनाते हैं फिर. क्या इट्स माई लाइक एडवाइस टू यू, यू बेटर स्किप निफ्टी. ज्यादा कुछ करो मत ये दिन पे, ट्राई करो बैंक निफ्टी ट्रेड करने को, सच में वो बेस्ट इंडेक्स है. एंड इन दिस 15 मिनट टाइम फ्रेम आई विल बी अवॉइडिंग एनीथिंग टू डू नॉन डायरेक्शनली. अगर ये नीचे आता है ना, यहाँ पे एक इसके नीचे कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हैं अगर हम 30 मिनट्स अगर सस्टेन होता है ना इसके नीचे, या आई टोल्ड यू 350 लेवल के ऊपर हम ले गए पुट साइड में अग्रेसिवली. सो दैट वाज माय एनालिसिस फॉर बैंक निफ्टी एंड निफ्टी फॉर टुमारो. एंड आई होप वो ट्रेड एक्सप्लेनेशन जो मैंने दिया थोड़ा बहुत तो आई थिंक हेल्पफुल हुआ होगा आपको, स्पेशली अगर इस हफ्ते आपका पैसा नहीं बना है. तो मेरा जब जब अच्छा प्रॉफिट होगा, अगर ये वीडियो पे रिस्पॉन्स अच्छा है, especially if you like the video, then I'll be making more of these videos and I'll tell Nikita to make a trade summary of like what we did, because वो ऐसे टेक्निकल चीज है ना, वो काफी अच्छे से एक्सप्लेन करती है वो. So I'll tell her to cover those topics, okay, the next time. Till then, thank you so much for watching. I hope you like this video and I'll see you very soon. Bye.